Hello students, welcome back to Tuition Masters class 9th and 10th YouTube channel. And today we are here with our grade 9 poem from your main book, that is Beehive, The Lake Isle of Innisfree. So this is a very beautiful naturistic poem written by W.B. Yeats. Alright, it is William Butler Yeats. He is the poet of this beautiful poem, The Lake Isle of Innisfree. So in our today's session, what are we going to cover? हम लोग पहले summary कर लेंगे, क्विक summary करेंगे पूरी poem का, stanza by summary. Then we'll do the theme, poetic devices, as well as the important questions of this chapter. बहुत छोटी सी poem है, nothing very difficult also, एकदम basic poem है. When you read the lines you can understand by there only what is the poem meaning. Okay, so let us start the summary of the poem The Lake Isle of Innisfree. But before starting, make sure to like this video, share to your friends and subscribe to the channel right away if you did not do it. So पहली बात आती है, लेक पता है, आइल पता है, आइल नहीं पता, और इनिसफ्री क्या है. तो बेसिकली लेक तो पता है क्या होता है, नॉर्मल वाटर बॉडी. आइल इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ आइलैंड. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइलैंड ओवर हियर. ओके, सो इंस्टेड ऑफ आइलैंड द पोएट हैज यूज्ड आइलैंड. ठीक है. अब इनिसफ्री क्या है, वो एक जगह है. ओके, इट्स अ place which is very peaceful and very naturistic as given by our poet. Okay, तो इसमें पोएट हमको बताते हैं कि वो करंटली लंदन में रहते हैं. ठीक है, ही इज करंटली लिविंग इन लंदन एंड नाउ ही वांट्स टू गो टू अ वेरी पीसफुल place of Innisfree. So let's read the first stanza, that is, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, and a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. Now what is it? पहले लाइन में बोलते हैं कि अब मुझे जाना है बस. I am very much tired of this normal routine of the city and everything. Now I want to go to Innisfree. For why? He wants peace. So for getting peace, calmness, he wants to live in the nature. So he says that मैं अब जा रहा हूँ Innisfree में. And one more thing is that when he was a child, okay, when he was a child, he used to live in Innisfree. So he wants to go back to Innisfree. उनको वापस जाना है Innisfree में. अब उधर जाके क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा. ओके, एक स्मॉल होम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आई विल मेक ऑफ व्हाट, क्ले एंड वॉटल्स. वॉटल्स का जैसे ना स्ट्रॉस जैसे होते हैं, एंड वी मेक फेंसेस आउट ऑफ इट, है ना, वो वॉटल्स होते हैं. तो क्ले और वॉटल्स का वो एक छोटा सा घर बनाएंगे और अकेले रहेंगे. ही विल बी लिविंग ऑल अलोन. Okay, no family, friends, nothing, all alone he will live. आफ्टर दैट वो 9 बीन रोज बनाएंगे. मतलब ग्रो करेंगे. बीन्स वेरी कॉमन चीज है इन इस फ्री के लोगों के लिए. तो क्या बोलते हैं कि मैं 9 बीन रोज उगाऊंगा. ओके, आई कल्टिवेट 9 बीन रोज, तो ताकि वो खा सके. कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए ना. सो ही विल ग्रो 9 बीन रोज. उसके बाद ही विल इवन हैव अ हाइव फॉर द हनी बी. मतलब उनको एक क्या चाहिए, हाइव फॉर द हनी बी का मतलब क्या होता है, उनको चाहिए एक बी हाइव. करेक्ट, एक बी हाइव चाहिए. ओके, ताकि उसमें से दो रीजन सोर्स हो सकते हैं. फर्स्ट रीजन एज पर द बुक इट इज ही वांट्स टू लिव इन द साउंड ऑफ द बी. बी लाउड ग्लेड मीन्स इन अ प्लेस वेयर ऑल द ओनली द bees are making sound. Glade is nothing but a place. Okay, it's a place. लाइक प्लेस मतलब एक जगह, उसको ग्लेड बोलते हैं. ओके, तो उनको बस अकेले में एक बी लाउड ग्लेड. ही वांट्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर इज वेरी पीसफुल, bees are buzzing all over, he is living alone in amidst nature and all. That is how he wants to live. So पहले स्टैंजा में ये हमको बताते हैं. ओके, I'll show you the detailed summary also, do not worry. Second stanza, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There, midnight's all a glimmer, noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. अब सेकंड स्टैंजा में बोलते हैं कि मुझे चाहिए पीस. आई एम टायर्ड ऑफ दिस कायोटिक प्लेस. अब मुझे चाहिए थोड़ी सी पीस. सो और पीस धीरे धीरे आएगी. एक साथ पीस ना, चलो भाई पीस मिल गए हमको, डी मार्ट से लेके आते हैं. नो, एक्चुअली नो. So peace
it will come slowly, steadily, right? So he says that dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. ठीक है, तो बताते हैं कि इनिसफ्री में वेल्स, वेल्स मतलब ऐसे कवरिंग सोच लो, कवरिंग होती है ना, किसी चीज को कवर करने के लिए उसको वेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मॉर्निंग को जो क्लाउड जैसे कवर करते हैं ना, वेल कर देते हैं, कवर कर देते हैं, उधर मॉर्निंग में क्रिकेट्स, क्रिकेट्स होते हैं ना ऐसे इंसेक्ट, ऐसे उनकी आवाज होती है, अच्छी आवाज, that insects will sing, okay, the crickets will sing, okay। मिडनाइट में इज ऑल अ ग्लिमर, बिकॉज हर जगह ऊपर पूरे स्टार्स ही स्टार्स, हमको सब कुछ एकदम मस्त दिख रहा है, दैट इज ग्लिमर। नून कैसा है, नून पर्पल का, बिफोर सनसेट एकदम पर्पल पर्पल पूरा एटमॉस्फेयर हो जाता है, एकदम काम पीसफुल हो जाते हैं, राइट। और इवनिंग में लिनेट्स गिवेंगे। लिनेट क्या होता है, ग्रे बर्ड है, ओके, ग्रे बर्ड होती है वो, उसकी एक छोटी सी बीक होती है, उस ग्रे बर्ड को हम लिनेट बोलते हैं, और लिनेट्स पूरा उड़ते रहते हैं इवनिंग में, ठीक है। तो अगर इफ दे आस्क यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ इनिसफ्री, सब क्या बोलोगे, मॉर्निंग में क्रिकेट्स, मिडनाइट में ग्लिमर, नून पर्पल ग्लो, और इवनिंग में लिनेट्स, ये सब आपको लिखना है स्टैंजा 2 में से, ओके। अब स्टैंजा 3, आई विल अराइज एंड गो नाउ, लास्ट स्टैंजा, ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core। अब वो क्या बोलते हैं कि अभी मुझे जाना है, अभी वो गए नहीं है, ही इज जस्ट इमेजिनिंग, ओके, वो बस इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे इनिसफ्री में जाना है, इनिसफ्री में ये होगा, मैं क्या करूंगा, दैट इज जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट हैपेंड येट, ही इज स्टिल इन लंडन ओनली। सो ही सेड दैट ही इज हियरिंग द लेक वाटर, the beautiful sounds, and he's just closing his eyes and imagining everything। जब भी वो रोड पे भी चल रहे हैं लंदन में, ठीक है, लंदन में अभी करंटली है, तो रोड्स में चल रहे, पेवमेंट्स में चल रहे, उनको फिर भी घड़ी घड़ी वो ही याद आ रहा है इनिसफ्री के बारे में, इज ओनली कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इनिसफ्री, द ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री, ओनली दैट ही इज थिंकिंग अबाउट। सो दैट इज व्हाई ही सेज दैट ही इज currently in London, but still he can hear all the nature of Innisfree in his heart, okay, right now, even living in London he can feel everything of Innisfree। so this is a very short एकदम ब्यूटीफुल सी पोयम है, राइट, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब इसकी डिटेल्ड समरी पढ़ते हैं, 3 स्लाइड्स में विल कंप्लीट द समरी, ठीक है। अब पहला, द पोयम फोकसेस, एक जगह पे पोयम फोकस करती है जिसका नाम है इनिसफ्री। द स्पीकर वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द chaos ऑफ द सिटी एंड वांट्स टू लिव पीसफुली amidst द नेचर। एमिट्स मतलब बिटवीन द नेचर, उनको क्या करना है, उनको पूरे ये सिटी के डिस्टर्बेंस, पोल्यूशन, इन सबसे दूर रह के कोई नेचरिस्टिक जगह पे जाके रहना है। वो बोलते हैं कि his urge to build a small cabin with mud and wattles and he wants to live there alone। He wants to have 9 windows and a hive for the honeybees। बोलते हैं कि Innisfree में जाके I don't want much, I just want a small cabin of like small cabin, as you can say, a small home I want, okay, in the I'll made of hut, mud and wattles, I can live there alone, I will grow 9 windows, I will make a hive for the honeybee, that's it। उनको कुछ नहीं, मैं आगे जाके बिल्डिंग बना दूंगा, कार खरीदूंगा, नथिंग मच, टू लिव अ वेरी सिंपल, राइट। हमको पता चलता है द मीनिंग ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट, सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ही जस्ट वांट टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ इन इनिसफ्री ऑल अलोन, करेक्ट। Next, the speaker expresses his wish to experience peace in the morning, where he could hear the peace-giving and beautiful sounds of the cricket। So बोलते हैं कि morning में Innisfree में he will be able to hear the sounds of the crickets। Okay, now the place Innisfree promises peace, which will emerge very very slowly as the hazy mist of the morning falls towards। व्हेन मॉर्निंग फटाफट से, तो एकदम पहले मिस्ट होता है, थोड़ा फॉग होता है, उसके बाद सनराइज होता है, सब क्लियर हो जाता है, राइट। सो सिमिलरली ही सेज दैट कि इनिसफ्री में भी स्लोली स्लोली पीस एमर्ज करती है, ओके। एंड क्रिकेट्स चोर करते हैं अर्ली मॉर्निंग में। मिडनाइट इज ऑल अ ग्लिमर, क्योंकि उसमें सब स्टार्स आर वेरी क्लियरली विजिबल ओवर देयर। द नून्स विल हैव अ पर्पल ग्लो, नून्स जो बिफोर सनसेट का टाइम होता है वो एकदम पर्पलिश हो जाएगा पूरा एनवायरमेंट। एंड इवनिंग आर प्रेजेंट विद द ब्यूटीफुल लिनेट्स, देखो दिस बर्ड यू सी, दैट इज अ लिनेट, ओके। सो लिनेट्स प्रेजेंस विल बी देयर इन द इवनिंग, सो दैट इज व्हाट ही imagines will be there in Innisfree। Last summary slide,
In the third stanza, the speaker expresses his deep longing to go to a place called Innisfree. Okay, here he starts daydreaming about it. Okay, he keeps pondering over the thought of going to Innisfree. Pondering means continuously thinking. Okay, thinking is the word over here. Continuously thinking over the thought of going to Innisfree, even while standing on the roadways or walking on the pavements. So पोएट सॉरी पोएट को एकदम अंदर से वो है आई वॉन्ट टू गो टू इनिस्ट्री एनी हाउ जस्ट वॉन्ट टू गो जैसे इमेजिन करो अगर आपको किधर जाना है लेट्स से यू वांट टू गो टू अ वाटर पार्क अब वाटर पार्क जाना है तो आप क्या करोगे हमेशा सोचते रहोगे मुझे वाटर पार्क जाना है आपको किसी चीज में मन नहीं लगे यू विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स यू विल जस्ट डे ड्रीम अबाउट इट हाँ आई विल गो टू वाटर पार्क आई विल गो ऑन दिस स्लाइड आई विल डू दैट आई विल ईट दैट यू विल कीप ऑन थिंकिंग राइट सिमिलरली द पोएट बोलते हैं कि मुझे भी इनिस्फ्री जाना, आई वांट टू लिव देयर और वो रोड्स पे चल रहे हैं पेवमेंट चल रहे हैं पर वो कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट इनिस्फ्री ओनली ही इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग दैट आई वांट टू गो टू इनिस्फ्री एंड टू लिव सच अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ऑल अच्छा क्लियर so in approximately 10 minutes we completed the full explanation of the poem. Okay, Lake Isle of Innisfree. Now let's do the theme and poetic devices. First आता है theme. What is the theme of the poem? Theme is nothing but nature, imagination, nostalgia. एक nostalgic poem है जिसमें nature और imagination के बारे में बताया गया as per the poet. Now the poem it's revolving around a very natural and very peaceful place known as Innisfree. Right now, Innisfree, when I talk about it, वो chaos, then corruption, pollution, and सबसे free है. It's like very different from all this thing. It's not a city, it's not a village, it's just a very peaceful place, right? And there are crickets, linnets, bean rows, beehives, etc., etc. in Innisfree, which are all very natural things, and we barely get to see it in city. It's absent in हमको city में ये सब नहीं दिखता, isn't it? Now imagination is very clearly reflected in the poem because the poet is daydreaming to go to industry. He is not in his industry गए नहीं है वो सोच रहे हैं मुझे industry जाना है ये करना है वो करना है right. Nostalgia is reflected throughout the poem when the poet expresses his longings to be at the industry like he was in the good old days of boyhood. जब वो एक छोटे से बॉय थे when he was a child that time also he was living in Innisfree. इस वजह से उनको पूरा मतलब पूरा वो पता है कि how does exactly it looks like right so he was already living that's not the first time okay. The poem portrays the importance of simplicity and nature in our day-to-day life. All the cities में हमको बहुत सारी opportunities है सब है but still simplicity and nature is a very basic thing we all should go through right. It makes us implicit on questions that attainability of a meaningful connection with nature in modern civilization. Although currently we are modern, we are modernizing, we have many devices, everything, but still nature is very important. We have to let वो जो connection है ना हमारा nature के बीच we have to keep that. We cannot break that connection. We have to keep that connection. So that is a basic theme हो गए. अब पढ़ते हैं poetic devices. First one, symbolism. Symbolism very clearly you can see क्यों Innisfree ये जगह को यूज किया गया है क्यों ताकि symbolize represent करने के लिए कि that is a very peaceful place to show peace naturalistic places उन सब के लिए Innisfree को यूज किया है as a symbol. So पहला हो गया symbolism. Next, metaphor. In the line from the second stanza, dropping from the veils of the morning. ओके अब असली में तो कोई वेल्स नहीं ड्रॉप हो रही ना सो क्लाउड्स आर कंपेयर टू द वेल्स सो कंपैरिजन हुआ है क्या कि क्लाउड्स जो है और वेल्स और क्लाउड्स का कोई रिलेशन नहीं बट उनको बोला गया कि क्लाउड्स है वेल्स है वैसे कवर कर देते हैं पूरे स्काई को सो क्लाउड्स आर कंपेयर टू वेल्स सो दैट इज मेटाफोर. नेक्स्ट इन वेयर द क्रिकेट सिंग्स. नाउ क्रिकेट वो एक इंसान तो नहीं है ओके insects can also sing but हमारी जो human ability है to sing right so इसलिए personification है कि cricket sing करे so that is personification. Next,
Imagery is also used like crickets, sound of lapping water, purple afternoons and all. When you close, अगर आपको ये words बताए जाए तो आप imagine कर सकते हो. So that is imagery. There are many others like the alliteration is there, assonance is there. ये सब भी है. Maybe ये basic है तो इतना important not that. These four are the major ones. अब rhyme scheme क्या होगी? Let's find out the rhyme scheme of the poem. Okay. Rhyme scheme I didn't write here purposely. We will find it together. Rhyme scheme क्या? चलो कोई भी एक stanza ले लेते हैं. Let's take stanza number 2. हर stanza का एक ही होता है. So let's see. Dropping slow हो गया A. Cricket sings, so slow और sings नहीं मैच करता B. Slow glow मैच करता है A. Sings wings मैच करता है B. So A B हर भी देखो. Innisfree honey bee A. Wattles made glade B. So A B is the rhyme scheme. तो क्या है हमारी rhyme scheme? Sorry, हमारी rhyme scheme of the poem is A B. A B is the rhyme scheme. Okay. अब कुछ important questions कर लेते हैं, then we'll end with the session. Look at these words. Peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning with the cricket sings. Now, what do you think about these things? हमारे लिए क्या वो explain करते हैं? That you have to say. So look over here. First, the main point is that it is extracted from the poem. Okay, the speaker is showing his expression, is trying to express, वो बताना चाह रहे हैं कि कितना Innisfree such a peaceful and naturistic place है वो. Crickets in the morning, the crickets are singing, and this is a very peaceful environment. That is what he is trying to explain over here. Peace comes dropping slow. Sorry, dropping slow from the veils of the morning to where the crickets sing. This line from the stanza means that कि peaceful एकदम a calm and silent place है जहाँ पे one can hear the vibrant and beautiful sounds of nature. अब अगर कोई क्रिकेट लेने हमारे सिटीज में तो इतना हॉर्न्स पोल्यूशन, इतनी नॉइज पोल्यूशन है तो कैसे कोई लिसन कर पाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट ही वांट्स टू पोएट WB Yeats, he wants to explain that कि it is such a silent and peaceful place कि आप इतनी beautiful nature के sounds भी hear कर पा रहे हो. And these peaceful sounds can be heard when the crickets are singing, linnets are flying. You can easily hear those beautiful sounds. Okay. Next important question. Look at the words again. Be loud glad. Evenings full of linnets swing. Lake water lapping with low sounds. What all pictures are created? And these are all part of imagery. Okay, these are all parts of imagery. Imagery बताते हैं ये. Now you have to say कि क्या ये आपके मन में created. This can be our own opinion based also. But as a general answer क्या होगा? Be loud glad. This means that he wants to live in a place where there's a beehive bees. Okay, they are amazing. They are buzz sound and everything, and he wants to live in such a place where the bees are buzzing and everything. First one. Evening full of linnets swing. That means linnets are what the small brown gray birds. Okay, so he wants that in the evening the sky at Innisfree वो पूरा ये linnets से भरा होता है. The linnets are beautifully flying in the evening sky. Second word. लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स. इसका मतलब क्या है? जो लेक वाटर है ना, लेक का जो पानी है वो एकदम आराम आराम से लो साउंड करता है. लाइक इफ यू वॉच एनी ASMR वीडियो, वो पानी का आवाज दिखाते हैं ना आपको कैसे वेरी स्लो द वाटर इज कमिंग गोइंग वॉशिंग थ्रू द shore with low sound. So that is very peaceful noises. So that is what he is explaining over here. ठीक है. So with that we have completed a quick mind map ले लो. This is a mind map. I am not explaining. I have already explained you here. अब introduction, theme, poetic devices और आपका पूरा एक slide में पूरा quickly complete हो जाती है. You can take a screenshot of it. ठीक है, screenshot ले सकते हो. And with that we have completed with the today's session, and we completed the full poem Lake Isle of Innisfree. Thank you so much for watching. Make sure you hit the like button, share with your friends, subscribe to the channel if you did not do it till now, or comment करो which more videos you want next. And currently students, we even got a community post on both our channels, right? Thanks to YouTube. So we will be uploading many polls, we'll be asking questions over there, and subject related questions too we will be asking you guys. So make sure to comment there also. So I'll be seeing you very soon in a very next amazing videos. Till then, take care students, and goodbye. Thank you so much.